For the screencasting innovating teaching method, I am Tejasri Jadhav from second year IT. I am going to teach you the first topic, which is under the digital logic families, is digital IC characteristics. Let's see the first characteristic. The first characteristic is speed. The speed is determined by the time between the application of input and change in output. For example, if you applied some input signal and you got the time taken for the output to change after the application of input, that will determine the speed. The second characteristic is fan out. The fan out means the number of loads that the output of gate can drive. For example, in a circuit, one gate output is going to drive the 3 gates. So that means the fan out is 3. The third characteristic is fan in. The fan in means the maximum number of inputs that can be applied to a logic gate. The fourth characteristic is power dissipation. The power dissipation is nothing but the power consumption per gate. So total power dissipation can be calculated by adding the all power consumed by each and every gate will provide you power dissipation for a circuit. Then fifth characteristic is a propagation delay. The propagation delay is the average delay time for the signal to propagate the input to output. For example, if you give any one signal for a circuit, the time taken for the signal to go from input to output is called as a propagation delay. The sixth characteristic is noise margin. The noise margin is the limit of noise voltage that can be present without disturbing the proper operation of the circuit. The name noise margin indicates the limit of the noise. This is the barrier of the noise that can be present in the circuit without disturbing the proper operation of the circuit. For example, if your noise margin or noise voltage is 3 volt, that is not disturbing your circuit operation, then it is okay. If your noise voltage is raising to 5 volt, if that disturbing the operation of your circuit, that is a problem. What you need to do? You need to put your noise margin up to the 3 volt only, because up to the 3 volt this noise not disturbing your circuit operation. Then the seventh characteristic is a figure of merit. The figure of merit means the product of propagation delay and power of dissipation. Always we need to get the less figure of merit, our operation is very good. Then eighth characteristic is the logic swing. The logic swing means the difference between the two output voltages. If your output is fluctuating, the logic swing is the difference of those two outputs, like VOH minus VOL. If a VOH is a high voltage and VOL is the low voltage, then the difference between them providing a logic swing. The ninth characteristic is a noise immunity. Noise immunity is maximum noise that a circuit can withstand without changing the output. The 10th characteristic is a breadth. The number of various punctuation available in a logic family is called as breadth. These are all 10 important characteristics of the digital IC characteristics. Thank you. CMOS. CMOS means the complementary metal oxide semiconductor, CMOS, also known as the complementary symmetry metal oxide, that is COS-MOS, is equal to the CMOS and is a type of metal oxide. CMOS is a type of metal oxide semiconductor field effect transistor. That is, it is a type of MOSFET fabrication. CMOS is a type of MOSFET fabrication process that uses the complementary and symmetrical pairs of P-type and N-type MOSFETs for logic functions. And generally, CMOS is used for IC chips, that is integrated circuit chips, including microprocessors and microcontrollers, memory chips, and other digital logic circuits. Then the next point is characteristics of CMOS. There are two main characteristics of CMOS. First one is the CMOS devices are high noise immunity. This one is the first characteristics of CMOS. And the second one is the low static power consumption.
low static power consumption. Hence, since the transistor of the MOSFET pair is always off, the series combination draws significant power only momentarily during switching between on and off states. Then, next is the operation of CMOS using NAND gate. The operation of CMOS using NAND gate. This is the circuit of NAND gate using the CMOS. CMOS is the combination of PMOS and NMOS. That is, the circuit shows the realization of CMOS NAND gate, which consists of two PMOS and two NMOS gates. If any of the input is low, low means it is at 0 volt, corresponding to the PMOS will be shorted and NMOS will be open. The Vout is shorted to VDD, and which provides the high output. Means when the input is low, we get the high output. Then here in this circuit, when VA and VB are high, that is at 5 volt, then the two PMOS will be open circuited and two PMOS will be short circuited, and the output V out will be shorted. Then the output V out will be shorted to the ground, and it produces zero output. Means whenever the input is high, that is 5 volt, then the output is 0 volt. Output is 0 volt. And this is the circuit of NAND gate using the CMOS. Thank you. Hi guys, this is Krisha Khandar. Today आज मैं आपको TTL ट्रांजिस्टर के बारे में बताने वाली हूँ. TTL यानी ट्रांजिस्टर सर्किट में ये DTL के जगह पे आया हुआ सर्किट है. DTL में पहले बहुत सारे ड्रॉबैक्स हुआ करते थे, उसके वजह से उन लोगों ने 1960 में TTL ट्रांजिस्टर का इन्वेंट किया. TTL ट्रांजिस्टर में जहाँ पे हम TTL ट्रांजिस्टर में डायोड यूज़ करते थे, यहाँ पे इस जगह पे, उसके जगह पे मल्टी एमीटर यूज़ करते हैं. मल्टी एमीटर यानी क्या? यहाँ पे जो ABC दिख रहा है, यहाँ पे ये N नंबर तक हो सकते हैं. ये एमीटर्स ये कलेक्टर है और ये एमीटर है. ये जब ये इस एमीटर को हम इस केस में भी इक्विवेलेंट सर्किट में हम ढूंढ सकते हैं. ये होता है NPN ट्रांजिस्टर. ये NPN ट्रांजिस्टर जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि यहाँ पे जब अगर हम लोग इनपुट लो देते हैं, ये जो लो आउटपुट रहता है ये 0 रहता है. 0 से ये लो आउटपुट यानी 0.2 ये जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये VCC से यहाँ पे फ्लो होता है करंट. तो यहाँ पे अगर लोएस्ट आउटपुट यानी 0.2 का वोल्टेज है तो यहाँ पे बी ट्रांजिस्टर बी तक आते आते वो 0.9 हो जाता है. अब ये जो T3 ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में होता है. और अब जब ये वोल्टेज यहाँ पे P3 यानी T2 का B2 यानी T2 का बेस एमीटर, यहाँ पे वो इतना वोल्टेज नहीं दे पाता. इतना वोल्टेज ना होने के वजह से ये T2 जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है और ये यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट होता है और दूसरा उसका रेजिस्टर VCC को कनेक्ट होता है. अब ये ऑफ स्टेट में होने की वजह से यहाँ पे ये है T3 ट्रांजिस्टर में बेस मतलब B3 ये भी उतना वोल्टेज नहीं दे पाता. उसके वजह से ये T3 भी ऑफ कंडीशन में आ जाता है. ऑफ कंडीशन में आने की वजह से यहाँ पे सिर्फ T1 ये जो है वो ऑन कंडीशन में रहता है. ये ऑफ कंडीशन यानी वो सर्किट ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलता है वो होता है हाई यानी कि 1. अब इसी जगह पे अगर हम यहाँ पे हाई इनपुट देते हैं, हाई इनपुट यानी 1, अभी यहाँ पे 0 की जगह पे अगर हम 1 देते हैं तो ये जो होता है ये फॉरवर्ड बायस की जगह पे ये रिवर्स बायस में हो जाता है और ये जो है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है. ये रिवर्स बायस में होने की वजह से ये उतना वोल्टेज नहीं दे पाता. उसके वजह से ये जो T2 T1 की स्टेट हो जाती है वो हो जाती है ऑफ. और यहाँ पे ये एमीटर उसको उतना वोल्टेज देता है जिसके वजह से हमारा T2 जो फॉरवर्ड बायस में है वो हो जाता है ऑन स्टेट में.
ऑन स्टेट में यानी वो उतना वोल्टेज, ये V2 उसको उतना वोल्टेज देता है जिसकी वजह से वो ऑन स्टेट में आता है। यहाँ से अब अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी कि ये B3 तक, B3 में भी उतना वो वोल्टेज देता है जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर 3 वो भी ऑन स्टेट में आ जाता है। ये दोनों अब इसमें क्या हो जाता है कि T1 ऑफ स्टेट में हो जाता है, T2 एंड T3 ये दोनों एंड ऑन स्टेट में होता है। ये दोनों ऑन स्टेट में होने की वजह से यहाँ पे जो हमको इनपुट मिलता है वो हो जाता है 0। ये जो है ये हमारा TTL सर्किट है। अब अभी हम इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे होगा, इसके 3 इनपुट्स होंगे A, B, C और ये उसका आउटपुट होगा। ये A, B, C के इनपुट्स हम 4, 2, 1 वाले BCD के रूल से लेंगे। 4, 2, 1 वाले BCD के रूल से लेंगे। 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। अब अगर इसका इनपुट यानी कि A, B, C अगर 0 रहा मतलब कि लो रहा तो उसका आउटपुट मिलता है हाई। मतलब अगर एक भी इनपुट अगर लो रहा तो उसका आउटपुट हमको मिलेगा हाई मतलब कि 1। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये भी 1। अब जो लास्ट है वो 1, 1, 1 है। मतलब कि तीनों आउटपुट मतलब A, B, C ये तीनों हाई आउटपुट है। तो इसका जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 यानी कि लो। तो अब ये जो हम पूरा ट्रुथ टेबल है ये पूरा NAND गेट का ट्रुथ टेबल है। मतलब ये जो है ये है NAND गेट। तो इसलिए हम इसको TTL NAND गेट बोलते हैं। TTL NAND गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो सेम टू सेम NAND गेट के ट्रुथ टेबल जैसा होता है। तो ये था पूरा हमारा TTL NAND गेट के बारे में। थैंक यू। I am Payal Rora and now I will be telling you the difference between TTL and CMOS. First of all, let us shortly know what is CMOS and TTL. CMOS is complementary metal oxide semiconductor, a type of metal oxide semiconductor field effect transistor. Whereas TTL, that is the time to live or hop limit, is a mechanism that limits the lifespan or lifetime of data in a computer or network. Now, let us see the difference between these two. The first parameter that has to be considered in the difference is the device used. In CMOS, N-channel and P-channel MOSFET are used, whereas in TTL, bipolar junction transistor is used. When it comes to noise immunity, the noise immunity of CMOS is better than TTL, and the noise immunity of TTL is less than that of CMOS. Now comes the switching speed. The switching speed of CMOS is less than TTL, whereas the switching speed is faster than CMOS. Operation region. CMOS is operated in ohmic region or cutoff region, whereas TTL is operated in saturation or cutoff region. Now comes the fifth parameter, that is a fan out. Fan out is basically a term that defines the maximum number of digital inputs that the output of single logic gate can feed. In CMOS, the fan out range is till 50, whereas in TTL, fan out is 10. Power dissipation per gate. In CMOS, it is 0.1 milliwatt, whereas in TTL, it is 10 milliwatt. Now, VIH, that is minimum input voltage level to be considered high. In CMOS, it is 3.5 voltage, whereas in TTL, it is 2 voltage. The next parameter, VIL, that is the maximum input level to be considered low. In CMOS, it is 1.5 volt, whereas in TTL, it is 0.8 volt. VOH, that is minimum output high voltage. In CMOS, it is 4.95 volt, whereas in TTL, it is 2.4 volt.
Now, the last term regarding voltage, that is VOL, that is the maximum output voltage level a device will provide for a low signal. In CMOS, it is 0.05 volt probably, whereas in TTL, it is 0.4 volt. Now comes the term regarding currents. IIH, that is the minimum input current level to be considered high. In CMOS, it is 1 microampere, whereas in TTL, it is 40 microampere. IIL, that is, IIL in CMOS, it is 1 microampere, whereas in TTL, it is 1.6 milliampere. The next term, IOH. In CMOS, it is 0.4 milliampere probably, whereas in TTL, it is 0.4 milliampere. They have no difference. They are same. In IOL, in CMOS, it is 0.4 milliampere, whereas it is in TTL, it is 16 milliampere. Now comes the noise margin. First of all, let us see the low level noise margin. In CMOS, it is 1.45 volt, whereas in TTL, it is 0.4 volt. Then the high level noise margin in CMOS is 1.4 volt, whereas in TTL, it is 0.4 volt. Now the propagation delay. In CMOS, it is 70 nanoseconds, whereas in TTL, it is 10 nanoseconds. The power supply volt in CMOS ranges from 3 to 15 volt, whereas in TTL it is 5 voltage. Now comes the speed power product. In CMOS it is 0.7 pj, whereas in TTL it is 100 pj. The last and the only parameter that has to be considered in the difference or comparison is the application. CMOS is used in portable instruments with battery supply, and TTL is used in laboratory instruments probably. Thank you.